बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड, दिस इज़ फैसल एंड यू आर वाचिंग डू यू नो। आज की वीडियो हम आइलेट्स कोर्स या इंग्लिश लर्निंग के हवाले से बना रहे हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपने कोर्स को बाकायदा उसको स्टार्ट करेंगे। जी, तो आइलेट्स असल में होता क्या चीज़ है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या, मतलब should we call it IELTS or is it IELTS? So your answer is IELTS। ठीक है, इसको हम IELTS बोलते हैं। ये होता क्या है, ब्रिटिश काउंसिल और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ का जो एसोसिएशन है उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है। इसकी प्रॉपर एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके भी इसको सर्च कर सकते हो, इसको देख सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है कि जो लोग नेटिव स्पीकिंग नहीं है, दे आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, और देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग कम्युनिकेशन व्हाइल दे आर स्टडिंग और दे आर वर्किंग। सो इमिग्रेशन को हासिल करने के लिए, इमिग्रेशन में जाने से पहले आपको ये टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ जगहों पर आपको ये चेक करते हैं, जिसके तकरीबन 3 फेजेस होते हैं। और उन फेजेस को कहते हैं, सबसे पहले जो होता है वो आपका लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है और उसके बाद फिर राइटिंग होता है। मैंने रैंडमली बता दिया है, ये प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। जी, तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम उसकी लिसनिंग साइड को देखेंगे। अच्छा, बैंड का जिक्र होता है, तो इसके बैंड्स कितने होते हैं, इसके टोटल बैंड होते हैं वो 9 बैंड होते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में आज भी किसी ने 9 बैंड तो नहीं लिए, 7 बैंड मैंने सुना है। 7 बैंड इट इज़ मोर देन इनफ। मेरे ख्याल में 5 बैंड जो होते हैं वो पासिंग अ टेस्ट होते हैं। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री टू कंट्री। कोई कंट्री के लिए 5 बैंड इज़ इनफ, कोई कंट्री के लिए 6 बैंड इज़ नॉट इनफ, मतलब 6.5 और 6.2 और 6.3, आई डोंट नो क्या उनका बैंड रेंज क्या है। खैर, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू स्टार्ट योर स्टेप्स टूवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। कैसे आप कर सकते हैं, कहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बिगनर्स जो होते हैं वो यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। मैं आपको इस वीडियो में सेंटेंसेस प्रोनाउंस करके बताऊँगा। प्रोनाउंसिएशन को आप लोगों ने गौर से सुनना है, इससे आपको वोकैबुलरी जो है वो आपकी बढ़ेगी, आपको ग्रैब करेगा और आपका माइंड खुल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्पीक। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। while listening you are actually gaining much more of your knowledge। ठीक है, तो आप लिसनिंग पे ध्यान दीजिएगा, आप लिसनिंग करें। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट से सेंटेंसेस बता रहा हूँ। शॉर्ट सेंटेंसेस होंगे, उनको रिकॉल करें, उनको रीमेमोराइज करें, उनको दोबारा खुद से पढ़ने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल है, मैं कोई कम्प्लेक्स फार्मूलाज नहीं बता रहा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है। तो ये जो है हमारा स्टार्टअप है। इंशाल्लाह हम इसके बाद जाएंगे अपने नेक्स्ट लेवल पर, और मैं आपको इवन टिल द एंड ऑफ दिस कोर्स और दिस सेशन वी विल बी एबल टू स्पीक, प्रोनाउंस एंड प्रोफेशनली डील लाइक नेटिव्स। तो हम लोगों ने आज की टॉपिक को सिर्फ लिसनिंग तक ग्रैब करना है। लिसनिंग क्या है, मैं आपको उसका सैम्पल भी बताता हूँ, मैं आपको वो करके बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसको एक्सपेंड करेंगे आइल्स का जो कोर्स है उसके हवाले से, और वो आप इजीली बग़ैर किसी स्टडी के कहीं और जाए, बग़ैर किसी एकेडमी वगैरह में जाए बग़ैर, यू विल बी एबल टू गेट a good band inshallah after watching all my videos। So let's move on to listening, और इसको आप लोगों ने ग्रैब करना है। जो मैं सेंटेंसेस बता रहा हूँ, सेंटेंस को आप लोगों ने दोबारा भी देखने हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। Jessica's mom walks with her to her classroom. Jessica meets her teacher. His name is Mr. Parker. The school bell rings at 8:45 a.m.
Jessica hugs and kisses her mom goodbye. Jessica's mom says, I love you. At 9 a.m., Jessica stands for the national anthem. Mr. Parker calls out children's names. Each child yells back, Here! Mr. Parker teaches them about letters. Mr. Parker teaches them about numbers. At 10:15 a.m., the students have recess. Recess is fun. The students get to play and eat. At 10 a.m., the students go to gym class. At 11:15 a.m., the students return to Mr. Parker's classroom. Mr. Parker tells the students to sit on the carpet. Mr. Parker reads the students a story. Mr. Parker teaches the students a song. The lunch bell rings. Jessica's first day of the school is over. My name is Anne. I love flowers. I have a flower garden. My garden is in front of my house. My neighbor has a garden too. My garden has different types of flowers. I have roses in my garden. I have tulips in my garden. I have petunias in my garden. My garden has different colors. I plant red flowers. I plant orange flowers. I plant blue flowers. I plant purple flowers. I take care of my garden. I water my garden every day. I kill the weeds in my garden. I kill insects that eat my flowers. I love my beautiful garden. The bride family went camping on the weekend. The bride family went to Silent Lake. The bride family left on Friday. They camped for 3 days. The bride family brought a big tent. They brought a lot of food. They brought insect repellent. The bride family had a campfire on Friday. They roasted marshmallows. They sang campfire songs. On Saturday they went canoeing. On Saturday they went fishing. On Saturday they went swimming. They went hiking on Sunday. The bride family saw many birds. They saw blue jays. They saw hummingbird. The bride family saw many animals. They saw a raccoon. They saw a squirrel. But they didn't see a bear. The bride family had a fun vacation.